Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. This is Hamid Hussain, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Dear students, it's our lecture number 3 on what you do is what you are. And this lecture, we are going to deal this reading as a comprehension passage according to the new proposed guideline policy, paper pattern and the distribution of the marks. So we are going to have the reading of this unit again as a comprehension passage. Then at the end of the reading we will deal with some of the questions which will be given according to the new policy guidelines and the distribution of the marks. And according to the new paper pattern and the distribution of the marks, 8 questions will be given after the comprehension passage having 250 to 350 words, and in the compulsory question the students are supposed to make a summary of the whole passage in 6 to 8 lines for 8 marks, and among the rest of the questions students are supposed to attempt 5 questions for 4 marks each. So as a whole it will be having 28 marks. So let's have the reading of this article as a passage, then we will be dealing with the questions. Title of the passage is What You Do is What You Are. We, unlike people almost everywhere else in the world, tend to define and judge everybody in terms of the work they do, especially work performed for pay. Charlie is a doctor, Sam is a carpenter, Mary Ellen is a copywriter at small advertisement agency. It is as if by defining how a person earns his or her rent money, we validate or reject that person's existence. Through the work and job title, we evaluate the worth of the life attached. Larry is a laid-off auto worker. Tony is a retired teacher. Sally is a former showgirl and blackjack dealer from Vegas. It is as if by learning that a person currently earns no money at job and maybe hasn't earned any money at job for years, we assign that person to limbo, at least for the present. We define such non-implied persons in terms of the past job history. This seems peculiar to me. People aren't cast in bronze because of the job they hold or once held. A retired teacher, for example, may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for loyal order of hibernating hibiscus. That apparently doesn't count. Who is Tony, a retired teacher? A laid-off auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends. But who is Larry? Until and unless he begins to work steadily again, he is laid-off auto worker. This is the same as saying he is nothing now, but he used to be something, an auto worker. There is a whole category of other people who are just something. To be just anything is to be totally discounted, at least for the present. There are a lot of people who are just something. Just a housewife immediately and painfully comes to mind. We still hear it all the time. Sometimes women who have kept a house and reared
6 children refer to themselves as just a housewife, just a bum, just a kid, bag lady, old man, student, punk, or some other. You can probably add to the list. The just category contains present non-earner, people who have no past job history, highly valued by society, and people whose present jobs are on the low end of the pay and prestige scale. A person can be just a cab driver, for example, or just a janitor. No one is ever just a vice president, however. We are supposed to be a classless society, but we are not. We don't recognize a titled nobility. We refuse to acknowledge dynastic privilege, but we certainly separate the valued from the valueless, and it has a lot to do with job and importance or prestige we attach to them. It is no use arguing whether any of this is correct or proper. Rationally, it is silly. That's our system, however, and we should not only keep it in mind, we should teach our children how it works. It is perfectly well to want to grow to be a cowboy or a nurse. Kids should know, however, that quite apart from earning potential, the cattle breeder is much more respected than the hired hand. The doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse. I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on job we hold. Where does a vice president product planning fit in? Is that better than vice president sales in public consciousness or unconsciousness? Writers earn diddly dot, but I suspect they are held in higher esteem than wealthy rock musician. That is, if everybody older than 40 gets to vote. How do we decide which jobs have great value and therefore the job holders are wonderful people? Why is someone who builds a shopping center called an entrepreneur while someone who builds freeways is called a contractor? I have no answer to any of this, but we might think about the phenomenon the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happened to be a judge, or next time we catch ourselves discount the personal worth of the garbage collector. Now, let's move for the questions appended to it on the board. Yes, dear students, we went through the text of this very article as a comprehension passage. Now, as I have told you earlier, 8 questions will be given at the end of the passage containing almost 250 to 350 words according to the new policy of the board. And you students are supposed to answer the questions appended at the end. The first question, which will be the compulsory one, and you students are supposed to do it, is the summary. You may be asked to summarize the given passage in few lines for 8 marks, and it is the compulsory one. So here you are supposed to summarize this very article we read right now, and the important points in all these read paragraphs have been noted down on the whiteboard. As the article is about the choice of the job
and the judgment of the people on the basis of the job, on the basis of the work we do. We are judged and identified by the people around us according to our job and salary. It has been written by American writer McWhirter. So, while summarizing the whole article, you should keep the important key points into your mind and you should write them down in your summary. The first important point in this article is, according to the writer, what we do is what we are. हमारी जॉब ही हमारी बुनियादी तौर पर सोसाइटी के अंदर पहचान है. लोग हमें हमारी जॉब के जरिए ही वो हमें डिफाइन करते हैं, हमें जज करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड while summarizing this text. The second point is, a jobless person is defined from the previous job. यानी किसी की अगर जॉब नहीं है तो उसको पहली जो उसने जॉब की है उसकी निस्बत से उसको डिफाइन करते हैं लोग. सोसाइटी के अंदर लोग उनको प्रीवियस जॉब से ही डिफाइन करते हैं, उनको जज करते हैं. दे आर नॉट गिवन मच वैल्यू. थर्ड जो पॉइंट समरी में आप पुट करेंगे वो है, अ रिटायर्ड पर्सन इज नॉट गिवन वैल्यू अनलेस ही बिगिंस टू वर्क अगेन. दिस इज अनदर फैक्ट विच इज मेंशन देयर बाय द राइटर कि अगर किसी शख्स के पास जॉब नहीं है, वो रिटायर्ड है, तो उसको उस वक्त तक सोसाइटी में अहमियत नहीं मिलती जब तक वो दोबारा कोई और काम, कोई और जॉब स्टार्ट नहीं करता. उस वक्त तक उसको अहमियत नहीं दी जाती. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इन द समरी. एक और पॉइंट है जो आप समरी में शामिल कर सकते हैं, विच इज वन ऑफ द लीडिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है, वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन दैट अ cowboy and a nurse is also respectable in our society. जो सोसाइटी के अंदर अकॉर्डिंग टू द राइटर McWhirter, खास तौर पे वो अमेरिकन सोसाइटी की वो बात करती हैं कि वहाँ पर लोगों की पहचान या उनकी जजमेंट लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब दे हैव. इफ दे हैव अ ग्रेटर जॉब, अ ग्रेटर पोजीशन और अ ग्रेटर टाइटल ऑफ द जॉब, दे आर रिस्पेक्टेड मोर. तो यहाँ पे वो बुनियादी तौर पे एक सजेशन वो पुट फॉरवर्ड करती हैं टू द पीपल, particularly to be taught to the young generation and the children, कि हमें अपने बच्चों को ये सबक देना है माशरे के अंदर कि एक काउबॉय या एक कैटल ब्रीडर की भी उतनी ही अहमियत होनी चाहिए जितनी एक वाइस प्रेसिडेंट की अहमियत होती है. यानी हर शख्स के काम की अहमियत है, हर शख्स के काम की ज़रूरत है, तभी तो वो काम करता है माशरे में आके. तो हर एक की बराबर की अहमियत होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द जॉब टाइटल द पीपल हैव. तो ये एक सजेशन है राइटर की तरफ से. सो दिस सजेशन कैन बी पुट देयर इन द समरी एज अ पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज, शी ऑल्सो सजेस्ट टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू मीन्स रीरीड, मेक अ रिसर्च फॉर दिस अनकैटलॉग सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस. खास तौर पे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन और कल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए वो यही मशवरा देती हैं कि दे शुड रीस्टडी, दे शुड रीरीड, दे शुड ऑब्जर्व दिस अनकैटलॉग सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट एंड दे शुड पुट फॉरवर्ड और प्रपोज सम सॉलिड पॉइंट्स फॉर the awarding respect and deference to the people, not on the basis of the high profile job or work or salary, rather on the basis of the importance of the work they do in the society. So this is the suggestion of the writer at the end of the article. तो ये इस तरह के जो important leading जो key points हैं उनको जो है आप समरी का हिस्सा आप बनाएंगे फॉर द कंपल्सरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज. उसके अलावा जो है
ऑलमोस्ट 7 और क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसी पैटर्न पे, उसी स्टाइल पे जिस तरह आप पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करते थे या जो कंसेप्चुअल थीमेटिक क्वेश्चंस करते थे हर लेसन के बाद फॉर 4 मार्क्स. सो जस्ट लाइक द सेम यू हैव टू अटेम्प्ट द रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स. तो ये एज अ होल जो है कंपलसरी मिला के तो ये आपके 28 मार्क्स पूरे हो जाएंगे. सो particularly according to the new scheme of study and the paper pattern, the comprehension passage reading skill has greater importance this time. For the next questions we will be moving to the another side of the board. So let's have the points on the another side. So let's come to another comprehension question here. That is your question number 2. What is McVitier's tone? Illustrated with few words and phrases that establish the tone. इस आर्टिकल में जो राइटर का टोन है उसके बारे में सवाल है कि McVitie का टोन किस तरह का है. और just to tell about the tone, you have to give some words as example, some words and phrases from the text to establish the tone. तो यहाँ पे जो McVitie का खास तौर पे इस आर्टिकल में जो टोन है, here she wants to get across to a message to the people, particularly in American society, that they mostly judge and identify the people on the basis of the job they have. जबकि वो इसके बरक्स एक ख़ास तौर पे नई जनरेशन को वो एक मैसेज यही देना चाह रही हैं कि लोगों के एहतराम का या लोगों को परखने का मयार जो है उसकी जॉब नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक सजेशन यहाँ पे देती हैं ख़ास तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कि ख़ास तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इस मामले में एक ऐसा मयार उनको अपनाना चाहिए, एक मयार लोगों के सामने लाना चाहिए जिसकी बुनियाद पर ये जो अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट या डेफरेंस का जो सिस्टम अमेरिका में कायम हो चुका है उसको ठोस बुनियादों पर तब्दील करें और लोगों को परखने के मयार सिर्फ जॉब या सैलरी जो है वो ना हो. तो यहाँ पे टोन के बारे में सवाल है कि राइटर का टोन कैसा है. सो ऑब्वियसली इट इज़ क्रिटिकल टू सम एक्सटेंट. इन द बिगिनिंग शी बेसिकली क्रिटिसाइजेस दिस सेट पैटर्न एंड सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट. और साथ ही जो है जो पैगाम जो मैसेज वो देना चाह रही हैं, फॉर दैट पर्पज शी इज़ क्वाइट सीरियस एंड द टोन इज़ अलार्मिंग एज वेल. इफ दिस सेट पैटर्न कंटिन्यूज देन number of people working for the betterment of the society can be discouraged by this system of awarding respect. क्योंकि हमें बड़े जो है टाइटल वाले कामों के अलावा बाकी काम करने वालों की अहमियत नज़र नहीं आती इस सिस्टम की नज़र से. तो यकीनन वो डिसहार्ड हो जाएंगे, वो डिस्करेज हो जाएंगे, तो फिर माशरे में एक अनबैलेंस कायम हो सकता है. सो her tone is quite critical, serious and alarming too. और ख़ास तौर पे ये जो सेट पैटर्न है इसको एक्सप्लेन करते हुए वो यहाँ पे जो कैटेगरी बताती हैं इस आर्टिकल में, ख़ास तौर पे लोगों की जो माशरे में काम करते हैं सोसाइटी में, there is a particular category of the people having the title just with the title of their job, and these are just a हाउसवाइफ, जस्ट अ किड, जस्ट अ स्टूडेंट. तो एक जस्ट कैटेगरी है. तो एक ख़ास टर्म हम यूज़ करते हैं इन लोगों के लिए माशरे में जो या रिटायर्ड हैं या जस्ट हैं या लेड ऑफ हैं. तो ये बुनियादी तौर पे ये इस्तिलाहात जो है उनकी माशरे में जो मकाम है उसी का ये तायुन कर रहे हैं. मीन्स दे आर नॉट गिवन मच रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. तो ये टोन है राइटर का विच इज़ क्वाइट क्रिटिकल इन नेचर.
which is quite alarming and serious as well. The next question is your question number 3, and here it has been asked, McWhirter says that we define and judge ourselves according to the job we do. Do you agree? Why? कि हम McWhirter के मुताबिक ज़्यादातर हम अपने आप को डिफाइन करते हैं या जज करते हैं अपनी जॉब के मुताबिक. क्या ये दुरुस्त है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और अगर इत्तेफाक करते हैं तो क्यों? तो ये इस क्वेश्चन के जो है 2 पार्ट्स हैं कि वेदर वी एग्री विद दिस वेरी सिस्टम ऑफ जजिंग और डिफाइनिंग आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू आवर जॉब, और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं. ये इस सवाल के 2 हिस्से हैं. तो यू आर सपोज टू गिव योर आंसर इन एग्रीमेंट और इन डिसएग्रीमेंट. आप यस में या नो में आंसर कर सकते हैं, लेकिन यकीनन हम में से सब इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इन आवर सोसाइटीज टू द पीपल आर जज एंड डिफाइंड बाय द जॉब और द सैलरी दे ड्रॉ. हमारे माशरे के अंदर भी लोगों को जो भी कद्र व मंजिलत दी जाती हैं, जो मकाम मयसर हैं, वो इसी जॉब की बुनियाद पर है. तो यकीनन राइटर के इस पॉइंट से हम इत्तेफाक करते हैं. पीपल आर रिस्पेक्टेड एंड गिवन डिफरेंस इन आवर सोसाइटीज टू ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी. तो ये पॉइंट है. और यकीनन ये जो स्टैंडर्ड है लोगों को डिफाइन करने का या जज करने का, ये बेस करता है बुनियादी तौर पे मटीरियलिज्म के ऊपर. ये मादियत पसंदी की एक अलामत है कि हमें कम से कम अगले काम करने वाले वर्कर का जो भी उसकी जो है इनर गुडनेस है, जो भी उसका यू कैन से सबलाइम कैरेक्टर है, या जो भी उसकी नोबिलिटी है, वो नहीं नज़र आती, बल्कि हम उसको परखते हैं, मयार उसका कायम करते हैं, उसको अहमियत देते हैं सोसाइटी में सिर्फ एक ही बुनियाद पर कि जॉब उसकी कितनी बड़ी है और तनख्वाह वो कितना लेता है. इसी बुनियाद पर हम उसके मकाम का तयन करते हैं, और ये मकाम का तयन करना मुकम्मल तौर पर ये मादियत परस्ती पर, मादियत पसंदी पर बेस करता है. सो हियर वी एग्री विद द राइटर कि दिस इज़ वन ऑफ द better fact in our society too. Let's move to the last question, that is your question number 4. What, according to McWhirter, is the attitude of the people towards unemployed people? कि सोसाइटी के अंदर ख़ास तौर पे माशरे के अंदर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके साथ माशरे में लोगों का किस तरह का रवैया होता है, ये सवाल है. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करने हैं वो हैं, these unemployed people in the society are not given any respect or deference by the people in the society. They are disregarded and discounted completely because they don't have any job and they are not given any value. They are valueless people according to this set pattern of defining and judging the people. And if they are jobless, obviously they are defined or they are known or they are judged on the basis of their previous job. अगर कोई previous job history है तो उसी previous job की निस्बत से ही उनकी शिनाख्त कायम की जाती हैं, उनको define किया जाता है, उनको परखा जाता है, उनका मयार जो भी है वो कायम करते हैं. Means they are not given any value or regard in the society because they are jobless. So these are the important points of the last question, question number 4. Obviously this particular discussion about the questions selected for this comprehension passage will help you a lot for dealing with the passages to be given in the upcoming papers, either they are seen or unseen. And that's all from my side. Take care. Allah Hafiz.